Welcome to Doctor Knowledge for You. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी पूरी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। हमारे पूरा वर्ल्ड जो है वो इस पैराडेमिक की सिचुएशन में इससे इफ़ेक्टेड हुआ था। तो इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे तो हुआ ही है, उसके साथ साथ हमारे पेपर्स जो हैं उस पर भी इसका बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे कि हमारा पूरा एक साल जो है वो ज़ाया हो गया, इसकी नज़र हो गया है। तो उसी तरह अब आपका जो पेपर होगा उसमें भी हर जो पेपर होगा आई थिंक उसमें हर पेपर में आपसे कोरोना वायरस के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने ख़ुद को इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है उसको आपने इन्हांस करना है अपनी। तो ये ऐसे जो है मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपका इंशाल्लाह इस बार जैसा कि सिलेबस में भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कि कोरोना वायरस के ऊपर एक ऐसे जो है इंग्लिश का वो भी आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आपने इसे पढ़ लेना, इससे आपका क्या होगा जनरल नॉलेज में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग मतलब इस तरह कोई भी आ जाता है क्वेश्चन तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो उसके अलावा ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार तो बड़ी उम्मीद है जैसे भी कोई पैराडेमिक या एपिडेमिक फैलती है तो उसके नतीजे में या कोई भी बर्निंग इशू जो होता है उसके रिलेटेड जो है पेपर के अंदर आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि आपको उसके बारे में कितना इल्म है एज अ स्टूडेंट। तो जैसा कि अब कोरोना वायरस तो बहुत ही बड़ा जो अलार्मिंग सिचुएशन थी, तो इसमें आपसे लाजमी तौर पे ये पूछा जाएगा कि ऐसे जो है वो आप लिखें कोरोना वायरस के ऊपर। तो बिला तखीर वीडियो में नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने जो बेल का आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जो है वो डॉक्टर नॉलेज फॉर यू से आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। हमारे पास आपसे जो टॉपिक पूछा जाएगा वो होगा जी राइट एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, तो आपने फिर लिखना है जी अपना एसे। मैं आपको बता रहा हूँ। The coronavirus spreading like a wildfire these days is a pandemic caused by infectious disease COVID-19 which comes from a large family of virus known as corona. The full form of this virus is severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2. China alerted the WHO to causes of unusual pneumonia in Wuhan city on December 31. COVID-19 is thought to have originated in a seafood market where wildlife was sold illegally. Scientists have pointed to pangolins, bats, or snakes as possible source, however, yet not been confirmed. Dr. Tedros, WHO's Director General, said, "Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It is a word that, if misused, can cause unnecessary suffering and death. The disease is continuing its spreading across the world. About 212 countries have been reported till the worst affected countries are United States, United Kingdoms, Italy, Russia, Iran, Spain, Germany and China, etc. Due to COVID-19, about 1.6 million people passed away out of 76 million confirmed cases, and 43 million people were recovered in the entire world. We are in this together, and we will get through this together, said Antonio Guterres, Secretary General of the United States. Pakistan is on 10th highest number of confirmed cases in Asia after India, Russia, Iran, Iraq and Turkey, etc. Third highest number of confirmed cases in South Asia after India and Bangladesh, and 27th highest number of confirmed cases in the world. The virus was confirmed to have reached Pakistan on 26th of February and 2022. When two cases were reported, one student in Karachi who had just returning from Iran, and second was in Islamabad. On 18 March, new cases had been registered in all four provinces, the two autonomous territories and Islamabad Capital Territory. Pakistan Prime Minister Mr. Imran Khan's initial response to the coronavirus was weak and indecisive.
He refused to implement a nationwide lockdown, letting Pakistan for provinces implemented their own lockdowns. The provincial action limited the initial spread of the virus. On 15th June, Daily News reports confirmed cases number reached their peak with 6,825 new cases reported. Government then started taking a more visible role in the coronavirus response when the virus was out of control in June. The National Command and Operations Center (NCOC), the joint civilian military body coordinated for the national COVID response, in which high-ranking military officers play increasingly visible role, enforced smart lockdowns in hundreds of COVID hotspots area of Pakistan. After that, the daily new cases number declined because of the lockdowns, but after the lockdown was removed, the cases of coronavirus roses in the second wave. Government and health authorities of Pakistan are taking vigorous action on coronavirus pandemic. Government of Pakistan has reported nearly 4 lakhs confirmed cases and 9,000 deaths. Some people are not taking it as serious as it should be. They must know that burying their head in sand can do nothing. We should take it serious and take a part in government's role in preventing this disease. Everyone should understand that the coronavirus is not a joke, it's a dangerous disease. Common signs of infections include fever, coughing, and sneezing, and breathing difficulties in severe cases. In severe cases, it can cause pneumonia, multiple organ failure, and death. The incubation period of coronavirus is thought to be about 14 days. That's why the sufferers are incubated at 14 days in the incubator. In contagious before symptoms appear, which is why so many people get infected. Infected patients can be also asymptomatic, meaning they do not display any symptoms despite having the virus in their systems. For prevention of the disease, the World Health Organization (WHO) recommends simple and basic hygienic steps such as regular washing of hands with soap and water, sanitize them, and covering your mouth with face masks and with your elbow when sneezing or coughing. Maintaining physical distancing, keep at least 1 meter distance from yourself and other, particularly if they are coughing and sneezing. Avoiding touching face, eyes, and mouth when with unwashed hands can also be helpful. People should avoid unnecessary unprotected contact with animals and be sure to thoroughly wash hands after contact and regularly sanitize them. Covering face masks is also very necessary as these days it is falling in the schools and universities, colleges. Covering of mouth with face masks is very necessary. May Allah keep everyone safe from this disease. Amen. जी, तो ये था आपका ऐसे जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो आपके पेपर का इंशाल्लाह इस बार लाजमी पार्ट होने वाले हैं। अब देखें, जैसे पिछले साल हमारे पास प्रीवियस डेज़ में वो डेंगू फीवर आया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर्स में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए थे। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे थे, एमसीक्यूज़ भी आ रहे थे, ठीक है। तो ये जो बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, इनको बहुत हाईलाइट किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स वो समझ सकें कि ये क्या चीज़ थी। तो आपके लिए, क्योंकि आपने नेक्स्ट जो है इन सब पे काम भी करना है फ्यूचर में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वजह से अब देखा जाए तो डेंगू फीवर नेशनल लेवल पे था और कोरोना वायरस तो इंटरनेशनल लेवल पे था। उससे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बर्ड फ्लू आया था उसको इन्होंने बहुत राइज़ किया था, ठीक है। तो अब कोरोना वायरस तो इंटरनेशनल लेवल पे एक पैराडेमिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई थी। तो 212 कंट्रीज़ जो है इन्फेक्ट हुई थी, जैसे पीछे हमने पढ़ा है। तो देखें कितना इसका इम्पैक्ट था और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो आपने खुद को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके लिए फ्री के नंबर हैं, क्योंकि ये तो अब पता चल गया ना कि ये तो लाजमी तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस जो है मैंने आपको बता दी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन्होंने ऐसे इंक्लूड किया है तो ये आएगा भी लाजमी। तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे आपने बाकी सारे सब्जेक्ट अपने प्रिपेयर करने हैं। इसको आपने लाइट नहीं लेना। मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है, इसमें 300 वर्ड से भी ज़्यादा जो है वो लिखा हुआ है। तो आपको उस मसले को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ड्स में वो कम ना हो, ये तो वो जैसे मैंने लिखा है आपको दिया है, आपने इसे अच्छे से बना सवार के, जैसे एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो लिखता है, पेपर को अटैम्प्ट करता है, तो वो आपने क्या करना है, उससे लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपके पेपर जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर किया करें ताकि उनका भी जो है वो फ़ायदा हो जाए। तो
کہتے ہیں نا کہ کسی کو فائدہ پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ضرور اجر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لازمی طور پہ اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے فیلوز کے ساتھ, اپنے گروپ میں شیئر کیا کریں, اور تاکہ ان کا بھی جو فائدہ ہو سکے. تو تھینک یو ویری مچ. اسٹے پروٹیکٹیڈ فرام دس سچویشن, دس پینڈیمک سچویشن. اور اب تو کیسز جو ہیں وہ اور بھی بڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ملاقات ہوتی ہے. تو اور بالکل آپ نے اپنے کمنٹس کا اظہار بھی لازمی کرنا ہے, کیونکہ آپ کے کمنٹس کی وجہ سے ہی ہم جو ویڈیوز ہیں بناتے ہیں. تو آپ کے جس طرح کے کمنٹ ہوں گے, جو آپ ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے, اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے ویڈیو بنائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کمنٹ بھی کریں گے, اچھے اپنے کمنٹس کا اظہار کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ملاقات ہوتی ہے جی. اللہ حافظ.